Hello students. In this video we start new unit which is statistics. Okay. What is statistics? First we try to know. Statistic is that branch of mathematics which deals with the collection, classification, representation, analysis and interpretation of numerical data. स्टैटिस्टिक क्या होता है स्टूडेंट? जिसमें हम कुछ डेटाज जो होते हैं ग्रुप और अनग्रुप डेटा, उन डेटाज को किस तरह से टैबुलेशन फॉर्म में लिखना, उनको ग्रुप, उनकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करना, उनका टैली मार्क्स निकालना, ये जितना अरेंजमेंट होता है ये स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं. जिस तरह से मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है उसी तरह से स्टैटिस्टिक्स भी एक सब्जेक्ट है. क्लियर? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक का ये बेनिफिट है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ का, फॉर एग्जांपल अगर हमें मैथ्स का क्लास 9th का परफॉर्मेंस लास्ट 10 ईयर्स का देखना है स्टूडेंट्स का कि किस ईयर में परफॉर्मेंस स्टूडेंट ने बेस्ट दिया, तो हमें हर साल रिकॉर्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है. अगर हम हर साल का एक एवरेज मार्क्स लेके चलते हैं और उनको ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं तो हम उससे किसी कंक्लूजन में आ सकते हैं कि किस ईयर का परफॉर्मेंस बेस्ट था. ठीक है? ओके. सो इन स्टैटिस्टिक्स what we will do, we will arrange the data in group and ungroup form and then find out the mean, median and mode. Clear? So one by one we study all these terms. First one is primary data. Statistics study begin with the collection data. Based on the method of collection, data may be classified into two categories. Now the data which we are collecting or which is given in the question, it is based on two categories. First one is primary data and second one is secondary data. What is primary data? If the investigator collect the data by personal observation and is responsible for their correctness, then the data are called primary data. अब जैसे आपने सुना है कि इलेक्शन के टाइम में जनगणना होती है, तो उस जनगणना में क्या होता है कि जो भी आपके घर में आते हैं इंक्वायरी करते हैं तो वो आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, सारा डिटेल्स लिख के जाते हैं. तो एक उनका पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो गया. सो ये सारे डेटास क्या हो गए, प्राइमरी डेटा हो गए. और सेकेंडरी डेटा क्या हो गया, इफ़ द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर द डेटा बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट सोर्सेज सच एज करस्पॉन्डेंस और पब्लिकेशन, देन द डेटा आर कॉल्ड सेकेंडरी डेटा. जो किसी के थ्रू मिलता है डेटा, अगर आप लोगों का जो रिकॉर्ड है वो हम लोगों ने पर्सनली ऑब्जर्व करके अगर आपका रिपोर्ट कार्ड बनाया तो वो प्राइमरी डेटा हो गया. लेकिन अगर हमें आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना है तो अगर हम किसी का हेल्प लेते हैं, किसी के थ्रू हमें मिलता है तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा. क्लियर? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. हाउ वी रिप्रेजेंट डेटा. सो डेटा इज रिप्रेजेंटेड in group form. Okay, so first we try to know how it is depend on the expression. So data may be raw, that is ungrouped data, or array data. Raw data, the data is a collection have been expressed in very collected, such data are called raw data. Okay, जो अनग्रुप डेटा होता है, जैसे अगर आपके मैथ सब्जेक्ट में मार्क्स किसी को मिले हैं, 25 मार्क्स का यूनिट टेस्ट है, उसमें किसी को 0 मिला है, किसी को 5 मिला है, किसी को 10, किसी को हाईएस्ट नंबर 25 भी मिला है, तो इस तरह का जो डेटा हो गया वो क्या हो गया, रॉ डेटा हो गया. और अरे डेटा क्या हो गया, अगर हमने उस डेटा को अरेंज किया, जैसे 0 से 5 के बीच में कितने बच्चों को मार्क्स मिला, देन 5 to 10 के बीच में कितने बच्चों को मार्क्स मिला, देन 10 to 15, 15 to 20 and 20 to 25. In this what we are doing, we are arranging the data in a class interval. Okay, so such type of data is called array data. When the data is arranged in group, it is called array data. When it is not arranged in a group, it is called a raw data. Understood, student? Now next one is variable. Variable is also of two types, discrete variable and continuous variable. A variable which can assume only a finite number of values between the given values is called a discrete variable. For example, if x stands for marks obtained, then x is a discrete variable for collection A, because x takes only integral values from 4 to 90. Clear? And continuous variable, a variable which can assume all real values between two given values is called a continuous variable. For example, the height and the weight of a person is a continuous variable. Discrete variable क्या हुआ आपका, जिसमें एक फाइनाइट नंबर
मिलता है, क्लियर। और कंटिन्यूस वेरिएबल जो कंटिन्यू हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूस वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हाइट, वेट, ये क्या हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, इज कॉल्ड द रेंज ऑफ अ डेटा। रेंज क्या होता है? बेस्ट एग्जांपल है, अगर 25 मार्क्स का आपका यूनिट टेस्ट का पेपर है, उसमें सबसे मिनिमम मार्क्स क्लास में 10 मिला है किसी स्टूडेंट को और मैक्सिमम 25 मिला है, और अगर हमें रेंज फाइंड करना है तो मैक्सिमम मार्क्स माइनस मिनिमम मार्क्स, इट मीन्स द मैक्सिमम मार्क्स was 25 and the minimum one is 10, so 25 minus 10 is 15, so 15 is the range of the given data. Clear student? I hope you understood. Now next one is frequency. The frequency of a value is the frequency of a value of a variable is the number of times it appear in a collection of data. frequency क्या है? फॉर एग्जाम्पल 25 मार्क्स के यूनिट टेस्ट में 0 से 5 तक के मार्क्स 6 बच्चों को मिले हैं, 5 to 10 12 बच्चों को मिले हैं, 10 to 15 मार्क्स 4 बच्चों को मिले हैं, 15 to 20 6 बच्चों को मिले हैं, एंड 20 to 25 2 बच्चों को मिले हैं। क्लियर? तो ये जो है नंबर ऑफ टाइम्स, वो क्या हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मीन एंड मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा। डेटा दो तरह के हैं, ग्रुप एंड अनग्रुप। तो सबसे पहले हम अनग्रुप डेटा का देखेंगे। सो द फॉर्मूला ऑफ अनग्रुप डेटा मीन इज ए, we denoted by a or x bar equal to x1 plus x2 dash 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 xn upon n, sum of variates upon total number of variates. Mean is equal to sum of variates upon total number of variates. Clear? जैसे मैथ्स अगर आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं और मैथ्स में 25 मार्क्स के यूनिट टेस्ट में 30 बच्चों को जो मार्क्स मिले, उनके सबके मार्क्स को हम ऐड करेंगे और ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वेरिएट्स। फॉर एग्जांपल 30 स्टूडेंट्स आर देयर, सो डिवाइडेड बाय 30. Clear? Then we get the mean of the ungrouped data. Okay, but if the data is grouped, then the formula is mean equal to x1 f1 plus x2 f2 dash dash up to xn fn upon f1 plus f2 plus f3 up to fn. f1 f2 fn क्या है? frequencies, and in short it is written as mean a equal to summation, this summation means sum xi fi upon summation fi, where I is varying from 1 2 3 up to n. Clear? So in first exercise we see how to find out the mean of grouped and ungrouped data. Okay student? Next formula is median of raw data. The median of raw data is the number which divide the observation when arranged in ascending or descending in two equal parts. अगर डेटा आपका अनग्रुप डेटा है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज कर लोगे। अरेंज करने के बाद आप देखोगे कि नंबर ऑफ डेटा इवन है कि ऑड। अगर ऑड है देन वी यूज़ द फॉर्मूला n+1/2th वेरिएट, और अगर इवन है देन द फॉर्मूला ऑफ मीडियन इज 1/2 ब्रैकेट n/2th वेरिएट प्लस n/2 + 1 वेरिएट। ओके, वेरिएट मीन्स पोजिशन, जो पोजीशन होगी। एग्जाम्पल देखिए, अगर एक क्लियर कर लेते हैं हम, ये डेटा है जो अनग्रुप डेटा है, इसको हमने पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया 6 10 14 15 18, देन वी सी वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, 1 2 3 4 5, 5 is odd, so here the number of variates is 5 which is odd. Now we use the formula of odd, so median equal to n+1 means 5 + 1/2 which is 6/2 which is 3, so third variate means third position, 1 2 3, so in third position number is 14, so 14 is the median. Okay, now student, based on this formula we start our exercise 1a of the chapter. Question number 3, find the mean of the first 5 positive integers. So the first 5 positive integers are 1 2 3 4 and 5. Mean is sum of observation upon number of observations. Sum of observations are 1 2 3 4 and 5. Add all the 5 numbers, we are getting 15, divided by the number of observations are 5. So 5 divided by 15, 15 divided by 5 is 3. Clear? Question number 7, the money spent by 30 students during the tiffin were as follows. Money spent in rupees, it is given in one row, and number of students
is given in the second row. Now, so total number of students are 30. Now we have to find out mean. So the first question in is given for the raw data, and the second one is array data, in which the data is grouped. Okay. So money spent in rupees, 0 rupees is spent by 5 student, 5 rupees is spent by number of students are 2, then 10 by 12, like this. Total number of students are 30. So mean is, we take this one as x1, x2, x3, x4, x5 and x6, and the number of students as frequencies f1, f2, f3, f4, f5 and f6. Now mean is x1 f1 plus x2 f2 plus x3 f3 plus x4 f4 plus x5 f5 plus x6 f6. We multiply x1 f1 up to x6 f6 and then divided by the frequencies. So the frequencies are f1 plus f2 plus f3 plus f4 plus f5 plus f6. When we add it, we are getting 0, 5 is 0, 5 2s are 10, 10 12s are 120, 20 into 7 is 140, 25 2s are 50 and 30 into 2 is 60. Add all the x1 f1 and then divided by the frequencies. So when we are added the frequency, it is 30, and x1 f1 up to x6 f6 is, the total is 380. So 380 divided by 30 is 38 divided by 3, which is 12.6. So mean is 12.6. Clear? Now question number 8. Find A if the mean of 6, 16, A, 12 is 14. Now mean is given, we have to find out the value of A. So mean is sum of observation upon number of observation. Number of observations is 4. Mean is given 14. 14 equal to 6 plus 16 plus 12 is 34 plus A upon 4. Cross multiplication, 14 4s are 56. So 56 minus this 34 is 22. So the value of A is 22. Clear? Now question number 10. The mean daily wage earned by 4 laborer is rupees 180. If another labor Hari is included in the group, then the mean daily wage is 185. Find the daily wage of the Hari. 4 लेबर्स का डेली वेजेस दिया हुआ है 180 रुपीज़. सो 4 into 180 is 720. Now when Hari is included, then that labor will be 5. So total wage of 5 labors, it is given 185. 185 is 180 into 5 is 925. ओके. पहले 4 लेबर्स थे जिनका वेजेस दिया था 180. तो जब हमने 4 into 180 किया, हमें 720 मिला. उसमें जब हरी इंक्लूड हो गया तो टोटल 5 लेबर्स हो गए. सो जब हरी इंक्लूड हो गया तो मीन था 185. 185 into 5 is 925. सो हरी वेज is 925 minus this 720, which is 205. Clear student? Like this you will finish up to question number 10, and in next video we will see the rest of the question of the same exercise. Okay, and you finish this question in the graph copy. Okay. Thank you student.